कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था जनता मंडल, सो व्हाट्स योर इनसाइट ऑन दैट? जो बचपन से जो सिखाया गया था पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के पास. यू जस्ट कीप ऑन गिविंग वोट बट यू आर नॉट गेटिंग एनी राइट टू लीव क्लीन एयर. आपको क्या लगता है कि इंडिया को सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है जो उसको एक ग्लोबल पावर बनने से रोक रहा है? आपको कॉन्फिडेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम? आज मैं बीए करके एमए करके करके जाऊंगा, मेरे को जिंदगी में उन्नति होगा? आई डोंट थिंक सो. रशियन लिटरेचर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर काफी सारे असर पड़ा. क्या इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या फिर यूएस स्ट्रैटेजिक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? फॉरेन पॉलिसी शुड बी रन बाय प्रोफेशनल्स and it should be clearly represent the national interest, not some parties or ideological individual bias. So Russia is the only country used 5 times they used veto power for India in United Nations. 5 times. दूसरा देशों के साथ रह के आप कभी सुपर पावर नहीं बन सकते. अब सुपर पावर बनने के लिए आपको खुद को जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है उसको चैलेंज करना पड़ता है. 2014 के बाद आफ्टर 2014 आप एक ऐसी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जिसका सपोर्ट करते हैं, और 2014 के पहले ऐसी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जिसका आप क्रिटिसिज्म करते हैं? Dubai and all that built the image from the 1980s. 90s onwards, Dubai is the dream destination for investment. It all took 2 missiles to destroy the myth, right? इंडिया को चाइना की क्या ग्रोथ स्टोरी से कौन सी चीज सीखनी चाहिए और कौन सी चीज जो है जो बिल्कुल कॉपी नहीं करनी चाहिए? वोट क्यों करते हैं? आपसे पूछो, हम क्यों करते हैं? This is Ekta Sharma. Sir, first of all, thank you so much for joining us today. Honestly, Young in Politics पर आपको होस्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. सर, आज की Thank you. कन्वर्सेशन में वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, यूथ और इंडिया के फ्यूचर के बारे में. बहुत स्वागत है Yes. सर आपका यंग इन पॉलिटिक्स पर. सर, Yes. मान लीजिए आपको कोई नहीं जानता और आपका नाम कभी किसी ने भी नहीं सुना, तो आपके बारे में अगर आपको कुछ शब्दों में, आपको कुछ सेकंड्स मिले अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? Okay. I will say hello. My name is Dr. V. Lenin Kumar. At present, I am teaching at the MIT School of Government, Pune, MIT University. I completed my PhD, MA MPhil PhD in International and Area Studies from Jawaharlal Nehru University. I was formerly Students Union President of Jawaharlal Nehru University Students Union. सर, इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सर, Yes, please. माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, सर, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी ये सब डिप्लोमैट्स के लिए है और आम जनता के लिए ये इतना मैटर नहीं करता है. लेकिन सर, आपके हिसाब से अगर इंडिया की कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन जो हर एक इंडियन को अफेक्ट करता है, तो सर वो कौन सी होगी जो उनको रियलाइज नहीं होती है? तो अभी तो अभी आप देख सकते हो जो वॉर चल रहा है, ईरान यूएस इसराइल वॉर में जो जो इंडिया का जो ऊपर जो प्रेशर आया, और जो डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रेड टैरिफ वॉर लेके जो इशू था, तो वो सब दोनों इंडिया के ऊपर असर पड़ा. उसका कारण से आपको देख सकते हो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, जो गैस के ऊपर जो असर पड़ा है. तो इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा आप जो बोले डिप्लोमेट्स करा हुआ, कि diplomats are the instrument to achieve the certain for goals. So diplomacy is not a only part of a foreign policy, but it is a key part. तो सिर्फ डिप्लोमेट ही नहीं है, और भी अलग अलग फिनोमिना होते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए. तो हर चीजों में जो डिसीजन लेते हैं वो असर पड़ता है फॉरेन पॉलिसी का. मान लीजिए चाइना का तरफ से हम लोग रिश्ता, अचानक से चाइना एक डिसीजन लेंगे, यूएसए से डिसीजन लेंगे, दोनों हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर्स है. तो सोचिए कितना असर पड़ेगा. सर, अगर Yes. आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक 15 साल के स्टूडेंट को एक सेंटेंस में समझाना हो, तो आप क्या कहेंगे?
बोलेंगे देश का राजनीति जैसे है वो ही फॉरेन पॉलिसी भी है। आपका फॉरेन पॉलिसी भी एक राजनीति ही है। फॉरेन पॉलिसी का अलग से कुछ ये नहीं है। देश का राजनीति चलाने के लिए जैसे एक रूल्स होता है, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक रूल्स होता है। वो देश का फॉरेन पॉलिसी और देश का राजनीति दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। सर इंडिया आपको, एक, आप ज्यादा फॉर्मल नहीं, आपको जो सवाल आपका मन में आ रहा है वो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी हाँ जी, सर इंडिया एक पूरे ग्लोब में एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि इंडिया को सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है जो उसको एक ग्लोबल पावर बनने से रोक रहा है? नहीं, ये मैं काफी, ये सवाल मैं स्टूडेंट से मैं काफी सुनता हूँ। मैं एक्चुअली काफी दिनों से लोगों को ये बताया गया था विश्व गुरु सुपर पावर। सबसे पहले आपके पास, आपसे एक मेरा एक सवाल है, क्या आप सुपर पावर के साथ रहना चाहते हैं, नहीं तो सुपर पावर होना चाहते हैं? नहीं, सर आपसे एक सुपर सवाल है। पावर होना चाहते हैं। सुपर पावर होना चाहते हैं ना? जब सुपर पावर होना चाहते हो फिर सबसे पहले होना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर को चैलेंज करना पड़ता है। ठीक है? तब तक एग्जिस्टिंग सुपर पावर का चैलेंज नहीं करेंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते अकोमोडेट करेंगे। अकोमोडेट कोई नहीं करेंगे आपको। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अबाउट अकोमोडेटिंग। को एक देश अपना राइट्स, अपना हितों को वो खुद लड़ना पड़ता है। तो दूसरा स्टेट आएगा, तो काफी लोग ये गलत फहमियां रहते हैं हम लोग ये पर्टिकुलर देशों के साथ रहने से हम सुपर पावर बन जाएंगे। दूसरा देशों के साथ रह के आप कभी सुपर पावर नहीं बन सकते। और सुपर पावर बनने के लिए आपको खुद को जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है उसको चैलेंज करना पड़ता है, नंबर वन। और जो इंडिया का, खास तरीके इंडिया का जो पोटेंशियल है, अभी रिसेंटली का आप डेटा वगैरह देखेंगे तो हम लोग को 6th पोजीशन मांगी है। तो इंडिया का वर्ल्ड लेवल इकोनॉमी में 6th में आ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमी इज वन ऑफ द की फैक्टर टू अचीव ए सुपर पावर स्ट्रक्चर। बिकॉज इकोनॉमी रहने से आपका और भी अत्याचार कर सकते हो, हथियार कर सकते हो आप। यू कैन बाई मोर वेपन्स and you can buy more security equipments, invest more on the military, on research, or your other thing. So having a good economy is necessary to achieve the goal of, I will say superpower. I will say at least to have a influential power, not a superpower. At least to have influential power. सर ईरान और रशिया ने कई बार इंडिया को अफोर्डेबल एनर्जी ऑप्शंस दिए हैं। एक टाइम पर ईरान इंडिया को रुपए बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट के थ्रू ऑयल भी सप्लाई करता था। लेकिन यूएस सैंक्शंस की वजह से, जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से आज वो जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। तो सर ऐसे रशिया, आप रशिया लेके बोल रहे हैं ना? यस सर, रशिया एंड ईरान। तो सर ऐसे सिचुएशंस में क्या इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, या फिर जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है यूएस स्ट्रैटेजिक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? नहीं नहीं, इसीलिए मैं ना पहले से ये क्लैरिटी करना चाहता हूँ। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी लेके जो आप बात हुए थे, सबसे पहले देश का क्या चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? सारा देश एक ही चीज सोचते हैं, एक ही चीजों लेके लड़ते हैं, दैट इज सर्वाइवल। ठीक है? और फॉरेन पॉलिसी में आगे इधर से उधर कुछ नहीं है। सर्वाइवल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉरेन पॉलिसी। बिकॉज एक बोलते हैं ना, कोई फॉरेन पॉलिसी में कोई दोस्त, परमानेंट दोस्त नहीं होते, कभी दुश्मन नहीं होते हैं। और दूसरा जो रशिया का लेके जो आ रहा है, रशिया, मान लीजिए हमको दोस्त अभी नहीं बने। लोगों को जो हमारे मीडिया, टीवी, हॉलीवुड में काफी इन्फ्लुएंस होकर रशिया को हम लोग को हमेशा जो दिखाता है जेम्स बॉन्ड मूवी का विलन होता है, दे आर ऑलवेज ड्रग माफिया। और रशिया में हमेशा ऐसे ही होते हैं, दे इन्वॉल्व वुमन। दिस इज द पोर्ट्रेट वी कीप ऑन मेक, दैट्स व्हाई यूएस में पोर्ट्रेट होने से जो हम लोग ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो गया। बट रशिया इज वन ऑफ अवर, I will say, closest friend. We are not perfect allies. We are our closest friend. Russia India का relation, it's a more than century old, more than US. See, because Russian literature, Indian
नेशनल मूवमेंट के ऊपर काफी सारे असर पड़ा। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट लिटरेचर नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल रशियन लिटरेचर्स भी है। आप देखेंगे तो जो टॉल्स्टॉय का जो वॉर एंड पीस का जो है, गांधी is highly influenced by the Tolstoy's of peace, love, was that influence Gandhi has actually. And also you can see in 1950s the influence of many other, now also in movies. You all know the Sunil Dutt movie called Mother India. Sanjay Dutt mother, Nargis played Mother India. That is called, so the Indian movies in 1950s, 60s called Soviet Revolution bolte hain. So we got influenced by that. And one of the most important aspect is Russia is the only country used 5 times they used veto power for India in United Nations. 5 times. All the 5 times the resolution brought by the US supported countries moved resolution against India. All the 5 times to 6 times it was Russia and Soviet Union helped India and they vetoed it for India. So people are talking about just oil. It's not about oil. कल मान लीजिए अभी कुछ कैश, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जैसे जैसे बात करते हैं, बोलते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे लेके आएंगे, हम पाकिस्तान इंडिया के बीच में मीडिएशन करेंगे, यूनाइटेड नेशन में रेसोल्यूशन से, ये सब बात करते हैं। कल ये यूनाइटेड नेशन में ये इशू आएगा, कौन इंडिया के लिए वोट करेगा, वीटो पावर यूज करेगा? क्या यूएस यूज करेंगे और चाइना यूज करेंगे? नो, कोई यूज नहीं करेंगे। यू नीड समवन, राइट? दैट्स व्हाई द compromise, the accepting the US term to accept the oil from Russia and not stop buying enough oil from Russia, it's a big mistake. Russia used to give oil in a discount. Now we are not getting discount. They given a very cheap oil. And remember, Russia will remember, we are also somewhere depending on Russia. Our 35% of the defense equipment is from Russia. And Iran and India relation is much, 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 much older. It's a 2000 years old relation, actually. So we should not change our position just because of, USA. So because US doing it because of its own interest. We are 99% energy dependent on other countries. So one has to see what the war in, you can say the West Asia will be keep on going. So we have to look after our own energy security, our own national interest. Our national interest is not depending on listening to others, and it's not depending on, voting against any party, anyone in the United Nations. Yes, it's really weakened us. सर, इंडिया को पहले बोला जाता था कि इंडिया एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता है और इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ एक बैलेंस रिलेशन मेंटेन करने के लिए जाना जाता था। लेकिन अब जो करंट टेंशन चल रहे हैं यूएस, ईरान एंड इसराइल के बिटवीन, तो अब लोगों को लगता है कि इंडिया अब एक इक्वली डिस्टेंट नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जेन्युइनली चेंज हो रही है या सिर्फ ये एक परसेप्शन है? सुनिए, एक एक हद तक वो थोड़ा चेंज हो रहा है। ये देर इज ऑफकोर्स देर इज सो मच चेंज एक्चुअली, बट बट द थिंग इज वी कैन नॉट प्रिटेंड समथिंग इन अ पब्लिकली, और करेंगे कुछ बोलेंगे कुछ, ऐसा नहीं हो सकता है। हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बट हम लोग को जो इशू जो नतीजा हो रहा है, हम लोग को लेंगे पोजीशन एक पर्टिकुलर देश के पक्ष में, जैसे इसराइल के पक्ष में लेंगे, यूएस पर पक्ष में लेंगे। बट जब इशू आता था हम लोग को बोलेंगे नहीं नहीं, हम लोग स्ट्रेटेजिक autonomy है। Strategic, there is a two different thing. Non-alignment and strategic autonomy both are similar concept. Non-alignment, it's between when there is a two powers. You don't want to be with any power, like the Soviet Union, one power, and it was the US. That time we are saying we are not aligned with anyone. Strategic autonomy, then there is a multiple powers trying to be power, multipolar world. When we have to think we will preserve our own autonomy, we can take a foreign policy decision according to our interest. So that is important. But the thing is, the last couple of years, we our position on many things have been very problematic, which is contradictory, and we can say people see through it. It's also by
गवर्नमेंट कुछ बोलते हैं, जिसका प्रॉब्लम यही है, सरकार कुछ बोलते हैं बट मीडिया दूसरा चलाते हैं. दैट इज कैन नॉट बी ए थिंग. यूर द रूलिंग पार्टी से समथिंग, द गवर्नमेंट से समथिंग, पीपल विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. यस, दैट्स अ प्रॉब्लम. सर, अगर इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बीच में से किसी एक को चूज करना पड़े तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सुनिए, ये दोनों साथ में जाते हैं. अब तो जियोग्राफी, नंबर वन, जियोग्राफी यू कैनॉट चूज बिकॉज इट्स a natural phenomena, and economy you can choose because your policies dictate. We are in a place, India, located in a place, one of the most populated place in the entire world. आप आसपास का देख सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, which is share the border with India. Okay, the countries I'm talking about, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Pakistan, these are the highly populated countries which sharing borders with India. But we are one of the least economically, trade relation with all of them. आप अपना दोस्तों के पास, आपको चाइना ऑल्सो गया, अपना दोस्त, अपना नाइबर से भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर कैसे आप इकोनॉमिकली आगे बढ़ पाएंगे? then because you are a biggest economy, you have a biggest market, they also have a biggest market, you can easily influence and influence it. But I think the problem is we are failing in that front. We are not. And if you say in entire world, this is the entire world, the population between 20 to 30, the highest number of people reside in this area, subcontinent. India, Bangladesh, Nepal, these are the countries have दुनिया से सबसे ज्यादा youth population. 60% youth populations are reside in these places. But the thing is, this is one of the most least connected and least economically, linked um, region, we can say. So India has to choose व्हाट वी शुड डू. इकोनॉमिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वोट करना है, वोट के लिए हम लोग इधर से इधर चेंज करेंगे, इसलिए अलायंस ने, इसलिए उन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे. आई थिंक वी शुड चेंज दैट थिंग. वी नीड टू लुक अवर इकोनॉमिक बेनिफिट बिकॉज इकोनॉमी इज द वन मेक यू द वर्ल्ड पावर. यस. सर, चाइना की बात चल रही है। सर, चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इंडिया बोलिए और जी. चाइना ऑलमोस्ट साथ में इंडिपेंडेंट हुए थे। तो सर, आपके हिसाब से इंडिया को चाइना की क्या ग्रोथ स्टोरी से कौन सी चीज सीखनी चाहिए और कौन सी चीज जो है जो बिल्कुल कॉपी नहीं करनी चाहिए? सुनिए, ये प्रॉब्लम है ना, लोगों ने, बहुत लोग पूछते हैं. मेरा मेरा काफी इसके लेकर ना, काफी मैं सोचता हूँ. मैं ये लोगों को सबसे पहले ये दिल पे लेना नहीं चाहिए कि we and China are different countries. Okay, our political history and our economic history, our freedom movement. See, we had a freedom movement from the foreign country, that is 1947, Britain. China, 1947 successfully established she completed civil war. They fought against Japan, then they fought against Kuomintang Party, then they kept Communist Party in 1949. So they established themselves as a, People's Republic of China, number one. And the other thing is China is not superpower now. China, powerful country now. China is powerful in 70s onwards, actually. So then they started moving with the US and opened their economy and all. And we should not think twice about, comparison between India and China. कैसे कैप्चर करेंगे, क्या होगा, which is much more different because both have a different setup. India is very different setup institutionally, and China is a very different setup institutionally. इंडिया का हम लोग को अभी तक, हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लेके बात चल रहा है अभी. और चाइना, इंडिया का बीच में डिफरेंसेस है कम से कम 14 ट्रिलियन का डिफरेंस है. 14 ट्रिलियन. वी आर जस्ट 5 ट्रिलियन नाउ. दैन ऑल्सो वी आर रिसीडिंग. एंड यूएस और चाइना के बीच में डिफरेंस है आपका 20, एटलीस्ट 30, एटलीस्ट 13 to 15 ट्रिलियन डिफरेंस.
US still one of the leading economic powerhouse. China is second because even though the difference is the India, you can see the number, the kind of difference. We are in a 5 trillion. China is 16 trillion. We are 11 trillion behind actually. So how do you catch up it? You cannot one suddenly you decide you stop everything, you just move on. No, it's need a systematic, adjustment. It's need a systematic change. You have to accept certain facts. You know, I think the Professor Kanti Vajpayee, he wrote a book. Uh, it's very interesting. Why India China cannot be a friends? That's a very different story. In that book, he said there is a civilizational change we need to make actually to catch up the China and do this thing. So that it should take a lot. I think the better we should not compare. This comparison, especially used by the West, especially US, to want to counter China, they use India. They keep on compared India, especially in 2000, 4, 5, 6, 7, 8. That time India growth is as equal as China. Okay, it's China 8% to 10% तक हम लोग को we reached almost as equal for 3, 4 years. That time US keep on comparing between India and China actually. It's countering the China. You can see the foreign policy magazine and the economic magazine that time they compare between the dragon and the tiger and the dragon, elephant and dragon and all. That was the Western comparison. I think we should not compare with China. We should have our own trajectory, economic trajectory, which we can make out easily because we are a democratic country. We have to take something, we have to move forward. So we should not compare. We will have our own, you know, trajectory, economic trajectory. But also, I'm telling you, economy is not the only criteria to achieve the superpower or influence. I I am using the word influential power rather than the superpower. The to be influential power, you can be less economy, you can be as a influential power. Like take an example, Russia. That's very good. You can take an example of Russia. Yes. Sir also said that in geopolitics there are no friends and enemies. So what do you Yes. think? Will China and India be friends in future? Let me ask you. Let me clarify a few things. In Second World War, in Second World War, US dropped atomic bomb on Japan. Now, who is the biggest ally of US to fight against China? Is Japan. And the Second World War, we are defeat everyone. Soviet Union and US came together, entire West, to defeat Germany. Then after the war, who became a close ally of West? It is Western Germany. West Germany, East Germany, they created it. And you can take a number of cases where the China was not recognized by the US, but later China was recognized by the US and given a super the status to what? To counter Soviet Union in 1970s when Richard Nixon visited and Henry Kissinger. They went, hardcore anti-communist Richard Nixon visited meet Mao, Chairman Mao at that time, where Henry Kissinger was there, and they met, and they became, friends for so many years. These all thing about China is bad and all. When did we start? Because of the Donald Trump. In the first 10 years, he said China is the problem. I'm going to have a trade war with China and all. The 2016. Then we all suddenly became China became an issue actually. See, India, China, we are friends or not. That is no matter of perspective. See, Japan, he occupied China during the Second World War. They just genocide. They killed millions of people actually. What Japan is now, it is not the same. Japan was a very imperial power. Now, who is the biggest trade partner for Japan? China. Then and Korea. Japan occupied the Korea.
Japan occupied Korea, and they also occupied the region. And who is the biggest trade partner of Korea now? It's Japan and Korea, Japan and China. And there is a war, there is a cultural war and difference between Vietnam and China for 700 years of cultural war difference, because the Chinese warlords were continuously attack Vietnam, trying to influence. But now what? Now Vietnam and China have a 500 billion economic transaction. So the politics is whether you decide, can we keep on having a fight, or do you want to say this will go on, because we are not going to resolve any border dispute now. This will go on. Let's have a peaceful, trade with others. Like we are not going to, because India is not going to disappear. Geographically, we are going to remain the same. And same for China. So the one thing you can do is to you know, have something to gain from it to for a development actually. That's important. दोस्त रहेंगे, दुश्मनी रहेंगे, कौन तैयार करेगा, किसी का नहीं पता है. Because all of the India, when India supported Bangladesh liberation war, US was opposed it. And when India was trying to take a Goa back, we sent a military to Goa, because by the time that time was Portugal was a part of a NATO. The NATO Article 5 says if anyone attack us, will be attack everyone else. So then they threatened to send the military to India. That time again, you know, Soviet Union and this thing has helped us. So you don't know who is friend, who is enemy. We cannot say. So we have to wait and see. Yes, we should have a very good relation with China, because because you have to see the first question I asked. China did not want to be with the superpower. It want to be with the superpower. It want to be a superpower. So if India want to be a superpower, we have to take our position on our own. We cannot say US से बात करने से हो जाएगा, उससे बात करने से हो जाएगा. I don't think so that is going to help us. Yeah. सर आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग इंडियंस अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं। दे वांट टू सेटल इन यूएस, अमेरिका, यूके, कनाडा। तो सर क्या ये एक इंडियन पॉलिसी की एक फेलियर है या फिर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की एक नॉर्मल रियलिटी है? सुनिए, दो दो चीजें, ठीक है. नंबर वन, ये अभी नया नहीं है. हिस्टोरिकली ऐसे ही होते जा रहा है. नंबर वन. अभी रिसेंटली ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ द many economic reasons and all. I don't want to go into too much into it because it will look like a very partition one. See, the most of them are going. First of all, going there. Why they're going? That is very important. They're going because of they find it they're getting economic opportunity. Say now there are many people who came from the doing this donkey method में जो लोग गए, जो लोग detain के वापस आए. As their interview clearly said, they spend around 15 lakhs to 20 lakhs to cross border to US. Imagine 15, 20 lakhs you are spending to do that. That much of amount you cannot, that shows, despite you have money, you cannot do progress here. And the other parties, so the question everyone has to ask, does our education system guarantee your success? आपको कॉन्फिडेंस है हमारा एजुकेशन सिस्टम? आज मैं बीए करके, एमए करके, करके जाऊंगा, मेरे को जिंदगी में उन्नति होगा? I don't think so. Take example of when we are a graduate student, we used to say when a school student, no, you cannot just study in school. You have to pass in the BA, then you get a job. Then you say no, MA. Then now after completing PhD, also people are jobless. The confidence, sometimes you need to have a confidence. I think our economy, our system of education system or economic system is not giving you the confidence. Actually, my thing is this trend will be reversed if you revive the economy. Much more easy important aspect. See, these things happen in China also. See, many people from China, they went to West when they opened. It's happened in the Russia also. Many people went and they come. Many people went from Russia to this 91.
when China started in 90s, still people do, and South Korea and Vietnam, and you can now the biggest the Nepal. The Nepal economy, the biggest contributor are remittance. Nepal youths are not staying there. They're coming out of the state. They're sending money back to them from the Gulf and Europe and India. That is what they're sustaining their economy. I think that it's not only here. I think it's a question about the entire economic structure also. I think the government has to give a importance to the point whether you study you will get a job. जो बचपन से जो सिखाया गया था पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के पास। जब वो कॉन्फिडेंस होगा लोगों को वापस आएंगे। वो करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमिक मॉडल हैज टू बी गारंटीड। भाई तुम एक एक इंजीनियरिंग डिग्री होगा और प्लस एक और होगा, तुमको नौकरी होगा इस देश में। ऐसे कोई कॉन्फिडेंस है नहीं हमारे देश में। दैट इज द प्रॉब्लम। यस। सर कई लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी में इंडिया की भी सेंचुरी होगी, विश्व गुरु का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या फिर मानते हैं कि रियलिटी से ज्यादा ऑप्टिमिज्म है? आपको मैं दो चीज बताता हूँ मैं। ये आई थिंक फॉरगेट अबाउट वेदर इंडिया सेंचुरी। आई थिंक व्हेन in the beginning of millennium approach 2000 2001 to that time people are really said in the 21st century is going to be Asian century. I think if you look at more closely, it's a 21st century is going to be Asian century, where you already see that China is there. you know China is going, it's one of the most important figure of this century. The story is the China, rise of China and rise of India, of course. The thing is, it is going to be Asian century. But the thing is, are we in a part of that, or we are still hoping, which we are already saying, or we are clinging into हमको यूएस के साथ रहने से हम लोग को मिल जाएगा, नहीं तो यूरोप के साथ रहना है। That you have to think about it actually. I think it will going to take some time. I'm not saying now. It will take some time because you can see the Dubai and all that built the image from the 1980s. 90s onwards, Dubai is the dream destination for investment. Gulf is the dream destination. Kuwait and Sharjah. It all took a two missiles to destroy the myth, right? The entire economy now people are going back. So now suddenly Iran is going to be a biggest player in the entire Middle East actually, West Asia. So we might be revive our economy and strong institutions. And the previous question I said, providing the confidence on our education system, that might help us. I'm not saying it's going to be an Indian century. I will say it's about Asian century where India will play a greater role in. Yes. सर अगर आज आपको पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर रहे होते तो अगले 10 सालों में इंडिया को किस कंट्री पर सबसे ज्यादा भरोसा या फोकस करना चाहिए और क्यों? नहीं, भरोसा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब एक और बार बताइए। पीएम का एडवाइस देने के लिए बोले थे, वो ठीक है, बट किस चीज के लेके बोलना है मेरे को? सर अगले 10 सालों में इंडिया को किस कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए? तो खुद को देश को ऊपर करना चाहिए, मेरे को वही लगता है। सुनिए, ये बात है ना, आपका ग्रोथ आप डिपेंड करते हैं। इट्स यू हैव टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ एक्चुअली। कई देशों के ऊपर आप तो नजर रख के ये देश रहने से हमको आगे बढ़ेंगे, ये देश रहने से हम लोग को जीतेंगे, ये देश के साथ रहे। नो, दैट इज नॉट। कैन यू सी एनीथिंग इज हैपन लाइक दिस? Last 10 years you can see this. That is not happening because everyone will look after themselves.
So we should not plan to think about having a relation with a one particular country rather than the strategic economic autonomy. Wherever you can get the influence, wherever you can try to get the support, wherever जो भी जगह पे फायदा हो रहा है उठाना चाहिए हमको, with the principle of course. That is what I always going to advise. I don't want to advise to Prime Minister. He has his own team and he has his own people. My thing is we should not look after any particular country rather than we should focus our own country. Yes. सर निकोलो मैकियावेली की थ्योरी थी कि पार एक बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस में सरवाइव करना है। तो सर पॉलिटिकल साइंस में पार की जो बात होती है तो आज के वर्ल्ड में ज्यादा पावरफुल क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या फिर इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल? नहीं, there is a two things. Okay. आप जो बोल रहे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल साइंस है डिफरेंट. पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पढ़ाते हैं वो देश कवर है. इट्स अबाउट स्टडिंग अबाउट स्टेट. पॉलिटिकल साइंस about how the state should be behave. International relation mostly discuss about the how the state behave with others. मतलब एक दूसरे स्टेट से कैसे बिहेव करेंगे उसका बारे में पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन. स्टेट के बारे में पढ़ना है आपको पॉलिटिकल साइंस. आप जो पावर लेके बात कर रहे हो एब्सोल्युटली पावर इज इम्पोर्टेंट. इंटरनेशनल रिलेशन में जाके आप देखेंगे तो रियल हिस्ट्री में बताएंगे पावर इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज ऑफ द मार्गंदो क्लासिकली बोलते हैं पावर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन वी ऑलवेज डिजायर पावर. बट लेटर द पावर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सिक्योरिटी. And now you are talking about which power is important. I think that with both powers are important. That is both. Look, take example Japan. That's very important thing. Uh, Japan, it's number four. Now we are trying to say number four in the economy. Germany is there, but they are not a military power. They don't have much say in international politics. Can Japan say anything against the wish of US? No. Can Germany say anything against the wish of UK, France, or Germany, US? No, they cannot. But India can say, China can say, Japan, Russia can say. So it is not a determinant factor about the economy alone. It is also a matter of the both combined. So that's why I said the economy is important to improve your military. And otherwise, you can be a North Korea. North Korea, why we are not messing up with anyone messing up with North Korea? Because North Korea have a nuclear weapon. They have a highly armament society. State. You are not going to mess up with them, but you sacrifice your economy for it actually. So these things are exist there. So one has to take it into account. So information technology will come automatically. The more the development technology you develop, you will always going to have a information technology in your hand. You can see the Second World War, we produced the military weapon. That military weapon itself later turned into be information technology, right? The monitoring and all, it's turned into be a TV and and radio signals later turned into be a cell phones, advanced internet. So it all going to be started from the military purpose, then later it turned into be civilian purpose. तो टैंक का इक्विपमेंट लेके हम लोग को काफी ये करके हम लोग इम्प्रूव करके लोकल ट्रैक्टर्स वगैरह भी इम्प्रूव किए हैं ना हम लोग. तो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव बोथ मिलिटरी एंड economic capabilities. Then it's automatically you'll have a technological what you call this a technological development. Yes. सर डेमोक्रेसी में कई बार डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम देखते हैं कि पॉलिसी सालों सालों पास नहीं हो पाती, जबकि ऑथोरिटेरियन सिस्टम में ज्यादा एफिशिएंट दिखाई देता है। तो सर इसका रीजन क्या है और क्यों? ये है ना, ये लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है. अथॉरिटेरियन रहना अच्छा होता है बिकॉज जल्दी डिसीजन होगा. क्वेश्चन इज जल्दी डिसीजन होने में बहुत सारा डिसीजन हो सकता है. मान लीजिए आपको पांचवा तल्ले में आपको गुद सकता है, वो भी जल्दी डिसीजन है, वो ले सकते हो आप. बट यू वॉन्ट टेक इट राइट. यू विल थिंक अबाउट इट. पांचवा मंजिल से गिरेगा तो आप तो मरेंगे, हाथ पैर टूटेगा, सब होगा. तो द कंट्री कैन नॉट टेक जल्दी डिसीजन. जल्दी डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता. जो जल्दी डिसीजन लेने का देखना है आप, जो डोनाल्ड ट्रंप को जो डिसीजन से
जो ईरान के साथ जो वॉर किया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेकिंग अ जल्दी डिसीजन, where they took a war without any consultant, without any second thought, then they trapped the entire country. Now they trapped the entire global economy. They are finished their allies. Their 13 military base was disappear overnight in, in West Asia, Gulf side. So you take a decision, but you have to face the consequences. In democracy, there is accountability. There is some consequence. So the tendency about, जल्दी डिसीजन लेंगे, जल्दी क्यों लेना है? Why can't we have a deliberate? Is it not a part of the, because remember, we all pay tax. Social contract is that. We all pay tax. The state must listen to us. सारा दुनिया में टैक्स देंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, टैक्स विदाउट listening anyone, then what kind of democracy you're talking about? Authoritarian is never about this. And people are talking about China, but China is completely different, by the way. It is not, China authoritarian इसलिए ऐसा हुआ. That is not the case. सर, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है या सोसाइटीज को और ज्यादा डिवाइडेड बना दिया है? See, this question I was thinking a lot. This is one of the most significant questions in it. You can say about in the present, in the contemporary time, actually, the social role of the social media. Social media brought energy to people. Social media give a voice to people that you cannot deny. Social media, because of social media, एक गांव से किसी के इशू है, वो भी आपको सुनने के लिए आता है. और दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको देखिए ना, टैलेंटेड, अलग अलग टैलेंट भी सोशल मीडिया को तो निकल के, तो कोई आजकल देखिए ना, डांस करते हैं, ये करते हैं, लोग लगता है यस वी हैव अ टैलेंट. But the social media also have a same thing. Of course, you have opinion, they have the opinion. But the thing is that uh, those who are having a control over social media, government or companies, are they doing a playing field? That is the question. लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो ठीक है, मैं मानता हूं, मैं ठीक है, तो ठीक है होना. इफ इट इज नॉट, टेक एग्जांपल, आजकल जो अभी रिसेंटली जो कॉकरोच जनता पार्टी करके होता है, उसको फेसबुक में टेक डाउन किए थे. एंड इट इज नॉट ओनली हियर. डोनाल्ड ट्रंप वाज बैंडेड फ्रॉम द ट्विटर. In his first term, he was banned from Twitter. That's a very, if you believe in freedom of expression, you give absolute freedom of expression. That is what it is. The social media is that, of course, all before social media it's a टीवी. लोग बोलते थे ये टीवी में आके बर्बाद कर देते हैं. बच्चे लोग टीवी के सामने बैठे रहते थे केबल टीवी आने के टाइम पे. Now before that, ये movies बोलते हैं. So people started doing this thing. But social media brought so much changes, and social media also give a life to the, you can say, new social movement where people can express their anger against the ruling party, and also it can make or break of some individual life also. Like a Me Too movement में हुआ था, कैंसलिंग कल्चर, ये सब बोलते हैं, वो भी है. तो वन, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हैव अ रिपरकशन ऑफ बोथ साइड. यस. सर, आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स डिबेट्स और ट्विटर ट्रेंड से बियॉन्ड जाकर पॉलिटिक्स को जेन्युइनली फॉलो करना चाहता है, तो उसे पहले कौन सी 3 बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर आइडियाज एक्सप्लोर करना चाहिए? तो सुनिए ना, पॉलिटिक्स का ना, आपका काफी, कोई किताब पढ़ के, ऑफकोर्स यू विल बी स्टार्टिंग विथ योर व्हाट यू वांट टू थिंक एंड डू एक्चुअली. बट थिंग इज, पॉलिटिक्स इज मच मोर न्यूआंस्ड होते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये सही है ये गलत, वो आसान हो जाता है. बट द थिंग इज, पॉलिटिक्स इज मच मोर न्यूआंस. आप जो बोले ना कि कौन सा, मैं कितना बोलूंगा, वो पढ़ेंगे, आपको सहमत नहीं है, फिर आप बोलेंगे ये इसमें तो ऐसे ही है, इसमें मैं क्या मानूं. देयर some great books are there. People should read about the great books, and some good biographies are there, for both for national international level. They should read actually good biographies and go ahead with it.
Political science, there is a fiction, non-fiction, there are many things are there. So saying this, it will make you reduced into one narrow understanding. Politics is very much into a, what you call, we can call it as a nuanced thing. So it's very difficult to point out books, and there are many books are there. People can read. Biographies are there. They should read Malcolm X biography. It was a very good book about Malcolm X and his rise to power. And India, you can read about Ambedkar biography, mm, biography of many leaders. And I think India, we are lacking this knack of non-political fictional political books. Like US had many. India, we are not having it. Otherwise, I would have suggested something. So it's my personal question. Do you support the ideology of Niccolo Machiavelli? Do you think कि हमें वो इंटरनेशनल रिलेशंस में और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? See, Machiavelli does not have idea. Machiavelli thoughts are byproduct of his time. It was anarchy, and that time was a war-ridden medieval Europe. Okay, the Machiavelli does not have it. That time it reflects on many ideas. Machiavelli says something you have to be ruthless as it is. And after Machiavelli, many people are improvised this thing. You have a E.H. Carr is there, then you have Markando is there, then there are many other people are improvised this idea. Machiavelli said because it's a medieval time. You cannot completely take it into everything because the modern nation states are different. That Machiavelli talked about monarch. The modern nation states are about you know democracy and collaboration and everything. The Machiavelli is good actually. He wrote what he saw. See, we write what is existing. We cannot conjuring. Otherwise, it will be fiction. So he wrote what was existing political situation. Yes. सर दुनिया भर में लोग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट लूज कर रहे हैं। क्या ये एक टेम्पररी फेज है या फिर हम डेमोक्रेसी को डीपर क्राइसिस पर देख रहे हैं? आई थिंक डेमोक्रेसी इन अ डीपर क्राइसिस मैं देख रहा हूँ मैं इसका कारण यही है। आप वोट क्यों करते हैं? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं एक पॉइंट वोट करते हैं। वोट क्यों करते हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ क्यों करते हैं? सर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। सिर्फ उसी के लिए वोट करते हैं हम लोग? क्या है? सर अपनी वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सर सबकी वॉइस काउंट हो एक हर एक। नहीं, हम लोकतंत्र में इसीलिए इलेक्ट वोट कर रिप्रेजेंट। सकते, बट वी डोंट वोट फॉर दैट। वी वोट फॉर व्हाट वी कैन गेट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमारा बेनिफिट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अगर सब क्या करेगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव? हमारे लिए कुछ करेगा ना, सड़क बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, मेरे लाइफ को थोड़ा बेटर बनाएगा ना मेरे। our representative, we elect people to make our life better, finance, socially, economically. That is what we vote. We don't vote people just because of some absurd philosophy about election, representation, mera baat sunna hai. No, no. We vote what we can get benefit out of it. But the question is, are we people are getting the benefit out of it? इसीलिए लोग को विश्वास नहीं है। लोगों का क्या बोल रहे हैं, जो लुक एट द यूएस, दे आर नॉट गेटिंग एनी इकोनॉमिकल एंड सोशल बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गया लोगों का। आजकल आपको 70 से 80 साल तक नौकरी करना पड़ता है। आप साल भर का आप काम करते ही जाएंगे, टैक्स देंगे, सेल्स टैक्स देंगे, ये टैक्स देंगे, करते जाएंगे, ओबीडियंट रहेंगे। फिर आपको फायदा क्या मिल रहा है? फिर क्या सोचेंगे आप सब चोर है। क्या दैट इज व्हाट इट इज ना। The question about is not about institutions. The institutions are always going to be there. Then who is running the institutions? That is important. Democracy will survive and sustain only. See, आपको सबसे पहले जो डेमोक्रेसी लेके जो लोगों को जो समय है वो थोड़ा दूर रहना चाहिए। डेमोक्रेसी इज इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, इट इज नॉट अ वेरी एंशिएंट कॉन्सेप्ट। मॉडर्न डेमोक्रेसी इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट्स एवॉल्व।
आप 1947 में when India got independence, you can just look, just think how many countries are independent. You can handful of four, 5 countries: India, Sri Lanka, Pakistan, and that's it. I'm not able to see any other countries when we got independent. That is the same case till 1970s. Where is the democracy? But the democracy has to ensure what people can get. Your life has to improve. जो आप तो पहला सवाल जो पूछ एक पहले एक सवाल पूछे थे, युवा लोग क्यों जा रहे हैं? बिकॉज उन लोग लग ही नहीं रहे कुछ होगा। उधर कुछ होगा तो जरूर रहेगा ना। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। द डेमोक्रेसी इज नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग। You keep on getting vote, the institutions are not delivering because of the people who running the institution, they're taking advantage of it. And of course, it's not only about India. Look at the what is happening in UK and what is happening in France, what is happening in the US. You all see, you vote, but you're not getting anything. People voted for Macron. Macron not done anything, and you voted for Stemmer. He's not done anything because they continue to support the corporate. They don't want to. They keep on increasing the taxes for the working low class and middle class people, but they are not doing any tax for a rich or anyone. They keep on getting tax exemption. That normally make people are saying, यार ये सही है, इस इन लोग के ऊपर भरोसा नहीं करना. That is what is leading to. So democracy is not a perfect system. Democracy is lead to mobocracy also. That's why in a classical liberals they don't support democracy because they believe democracy lead to a suspension of liberal rights. Because you elect someone who will be represent the mob, not the principles. You cannot expect every time democracy में लोग आएंगे, लोग exactly principle follow करेंगे. No, that is not happening. That's why people lose faith in a democracy in institution. It is in danger. Yeah. सर, इसी से मिलता जुलता सवाल है कि अगर इलेक्शंस किसी कंट्री को ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं बनाते, तो फिर क्या और चीजें जरूरी होती है इसके अलावा? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट से इंश्योरिंग द राइट्स। आजकल तरीके में राइट्स लेके कोई बात ही नहीं करते। राइट्स से राइट्स आल्सो गो इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? ऐसे यूएस में आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। दैट्स वन काइंड ऑफ राइट। बट देर इज नो अदर राइट। उन लोग का हेल्थ केयर फ्री नहीं है, मिनिमम वेजेस नहीं है, और उन लोग का पूरा हाईली कॉर्पोरेटाइज है। कोई कुछ करने वाला नहीं है उधर कुछ। They work till they're 70, 80 years old. There is no social security. There is no social net. Everything is happening. The other time, the same thing going for others also. That is then what is the point? That is what we are ending. So I asked my BA student the simple question. So every year there is a survey. They're saying the world happiness index. The first country and second country. You know which is the happiest country in the world सर, according to index? फिनलैंड। Finland. So now I'm asking you, why don't you India want to be Finland rather than you want to be US? कुछ नहीं होना चाहते हैं आप? Don't you want to be happy? यस सर। It's a philosophical debate now. Whether why don't you want to be happiness index rather than you want to be some country which does not have anything to offer much? What is happiness index? That is the question. The democracy and like you said, it is not offering anything, and the rights it's completely taken away from you. You just keep on giving vote, but you are not getting any rights. Right to live, clean air, clean water. Now everywhere is a clean air, clean water is a part of the basic rights. Now, if you look at India, are we getting it? Are we not? Who are we talking about it? These things are matters, not really. That is a major thing. This is going to be a major issue in the future generation. सर, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल मिथ है जो मिलियंस ऑफ इंडियन बिलीव करते हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग वो गलत है?
बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है. The first and foremost, we keep on thinking we developed, we are the Vishwa Guru. That I find it very, sorry to, it's very offensive. It's a self-congratulatory, you know. कोई आपका कभी चाइनीज लीडर और चाइना का जो लिखा हुआ लोग आर्टिकल, यू एवर रेड saying we are the leader of the world? We are not. That is what is important. But here we keep on saying we are Vishwa Guru, we are this, we are that. I'm saying have a normal understanding. We are not. See, I am saying you can believe. Belief systems are different. भगवान है नहीं है वो बिलीव करो वो अलग बात है. Because that is a personal choice. But asking my country is become a leader of the world, Vishwa Guru. See, the word Vishwa Guru, I find it people are still keep on harassing me. When I tell them, and what is the criteria to achieve this? What is the criteria? Do you have anything to criteria? Military, economy, or social? No, that's a myth people are living actually. See, that I don't want to insult. My patriotism completely different. That lead to the kind of behavior we exhibit in the public places nowadays in the Western countries, actually. And we go to few days back, people are dancing in an airport, people are dancing randomly in the streets of Europe and all. Because that's coming from the belief system. I'm a leader of the world. You have to follow me. You should not question me. So I think that's a very disappointing to people started believing without any proof. Yeah. सर अगले अगर 20 सालों में इंडिया में एक पॉलिटिकल चेंज लाना हो तो वो आप क्या लाना चाहेंगे? सुनिए, मैं ना वो लाना, मैं तो लाने के नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ. मैं लाने से छोड़ दीजिए. मैं देखना चाहता हूँ एटलीस्ट लोग थोड़ा सा एनवायरमेंट लेके थोड़ा सीरियसली बात करें. बिकॉज I believe that's a very serious question because generation after generation, forget about my parents' generation, our generation, I can consider we are all same generation because we're living at the same time actually. We are witnessing the climate change in our hand each and every year. People are don't realize climate change also lead to everyday issues. मान लीजिए गर्मी अब ज्यादा होने से इंडिया में देखिए ना, पिछले आप जाके सर्वे कर सकते हैं पिछले 5 साल में कितना एसी बिका है देश में. हाउ मेनी एसी आर सोल्ड. एसी होने से और गर्मी बढ़ेगा, एनवायरमेंट का डैमेज होगा. और एसी बनने से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है आपको हाई वोल्टेज, आपको पावर ड्यूरिंग समर टाइम यू हैव टू यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी. That lead to power shortages that affect the everyday household, companies, industries, and your everyday life. And we keep on thinking about, EV बना देंगे यार 5. तो गवर्नमेंट बोल रहे 2030 तक ईवी बनाएंगे. ईवी बना के रोड में थोड़ी ना कार चलते चलते गाड़ी रोड में खड़ा हो जाएगा. बिजली नहीं होगा तो कैसे करेंगे आप? See, environment is just such a serious thing. You need to think about environment and clean water. That I believe next 20 years, if people environmental cause should be the primary thing. I think if the people started thinking about too much heat, clean air, clean water, better road, I think that will be the major change. I think I want to see, not I will do it, but I want to see in this country. सर अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक चेंज लाना हो तो वो क्या सबसे पहला चेंज होगा? सबसे पहले हम लोग को ये सोचना पड़े हम कौन है. What we can do. Would be centered around individual or should be centered around our national interest? Our national interest should be a paramount, right? So in that case, I expect the foreign policy should be run by professionals and it should be clearly represent the national interest, not some parties or ideological individual bias. That I really wanted.
सर इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन एंड इट्स लास्ट क्वेश्चन। सर Yeah, yeah, go on. 2014 के बाद आफ्टर 2014 आप एक ऐसी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जिसका सपोर्ट करते हैं, और 2014 के पहले ऐसी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जिसका आप क्रिटिसिज्म करते हैं? I think some large extent India's relation with Russia remained the same, except the last 1 year, because we understand having a good relation with Russia is important. I think that kind of significantly, I think we improvised actually. And also indirectly, we are not telling directly, indirectly, we are keep on saying, to improve our relation with China. Because we keep on saying that. I think that one of the point I think we realize it's a continuity and the same to improvising the relation with the China and Russia. That we are having a continuity. That's it's one kind of point I say, okay, we are fine with it. Except the last few 1 year we are reducing the petrol buying energy from Russia, but rest of them is fine. सर Yes. वन लास्ट क्वेश्चन। Go सर on. कॉकरोच जनता पार्टी, उनका कल प्रोटेस्ट हुआ था, तो इस Hello? पे आपका क्या इंसाइट है? हेलो सर। सर हाँ इसमें बोलो बोलो लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी सर, इसमें लास्ट पूछिए। क्वेश्चन। सर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था एट जंतर मंतर, सो व्हाट्स योर इनसाइट ऑन दैट? See, unlike many people, I want to say what they're going to do the next. Actually, they're doing it. It's a very genuinely question, right? See, NET exam, it's one of the most competitive exam. In that exam, the answer sheet or the question paper leaked in the earlier, it's affects the students. That's why we say that the why students want to leave India and go abroad. You yourself ask. We don't have a confidence on people's Indian exam system or have a good outcome. One has to wait and see. You can have the Cockroach Janta Party as a parody account. You can have a social movement kind of thing for a limited period of time. But how long it will have a political impact, one has to wait and see. The political impacts, because the US also, they had many protests. Trump ka khilaf, first time also there had many protests and all. But when the election came, the second term, 24, Trump won even bigger margin and majority, where he won popular vote, he won more state and more this thing. So, despite the protest in urban center, how much actually the rural centers and other places and cities are people are voting, that matters. So one has to wait and see how people are approaching. Maybe to pacify people, they might do something to remove Pradhan or some. I don't think so. They're going to remove Pradhan. I don't think so. They'll remove the education minister, but they will wait and see how much. Because I heard they already filed a FIR. One has to see whether they will arrest them or not. If they arrest them, what they're going to do and all. But that it's a kind of positive, I will say, because of it's a non-political, because I will say it's a non-traditional political initiative. It's not initiated by any traditional party or support anything. I think it's initiated by the individuals on their own. Let them say, let them see what is going to happen. One has to wait and watch. Yes, सर थैंk you so much sir, this has yes. been a really insightful discussion. I hope I satisfied you with my answers. Yes sir.